Practically speaking, there are two different methods by which we can sequence the DNA. One method is known as enzymatic method. The second one is known as chemical method. The names are based on the way we perform the sequencing. Enzymatic method में हम enzyme use करते हैं to make the second strand of the DNA, जबकि chemical method में हम DNA को break down करते हैं using a chemical. These methods are also termed as Sanger's method of DNA sequencing for enzymatic method or dideoxy method, and Maxim Gilbert's method for chemical method, after the name of the scientist who for the first time reported these methods. अब हम बात करेंगे DDNTPs और डाई मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग की. डाई न्यूक्लियोटाइड एक नॉर्मल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता एक न्यूक्लियोटाइड है which lacks an oxygen at carbon number 3. Dideoxynucleotide can take place during synthesis of DNA strand in place of DNTP. Normal nucleotide की जगह पे हम dideoxynucleotide को incorporate कर सकते हैं because of its structural similarity. And once this dideoxynucleotide is involved or is going to be part of the DNA strand, further extension from that point is not possible. So हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारा डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जाके इनकॉर्पोरेट होगा DNA strand में, उसके आगे from that point onward further synthesis रुक जाएगी, DNA strand further elongate नहीं होगा. The reason behind this is the structure of dideoxynucleotide. If we look at the carbon numbers and if we look at the available oxygen or hydrogen at carbon numbers, carbon number 2, when it lacks any oxygen, this is called as DNTP, deoxynucleotide triphosphate. But in dideoxynucleotide triphosphate, carbon number 3 is the second position where no oxygen is present. When this is the situation and we use this dideoxynucleotide during DNA replication or the synthesis of the strand, if we look at this picture, this is the structure of normal DNTP, this is the structure of dideoxy NTP, nucleotide triphosphate, and the absence of oxygen at carbon number 3 is responsible for termination of DNA strand synthesis. उसकी रीज़न क्या है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब भी बनना होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में, तो कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उस पे जो हमारे पास ये फॉस्फेट वगैरह हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन इट इज़ गोइंग टू मेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. डाइडिऑक्सी में चूंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, so further extension or further bond formation is not possible. When we have to perform this sequencing method using dideoxynucleotides, then we have to set up 4 reactions in parallel. 4 different tubes में हमें जो है reaction establish करना पड़ता है. हर ट्यूब में हमारे पास DNA टेम्पलेट होगा, पॉलीमरेज होगा, नॉर्मल DNTPs होंगे और एडिशनली एक किस्म का डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होगा, ताकि हमारे पास ये आइडिया मौजूद रहे कि इस ट्यूब में जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं इनका आखिरी न्यूक्लियोटाइड कौन सा है. वंस वी रन दीज 4 reactions in parallel and after that we have to go for gel electrophoresis. Gel electrophoresis से हम जो है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रीड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अगर ये फ्लोरिसेंटली लेबल्ड हैं, देन वी कैन यूज ऑटोमेटिक एनालाइजर. इफ वी लुक एट दिस पिक्चर दैट वी आर हैविंग 4 different setups.
one is containing dideoxy TTP, ATP, GTP and CTP. ये template DNA है. Template DNA, when it is going to synthesize the newly complementary strand, wherever the dideoxy comes, it is going to be terminated. The strand synthesis is going to be terminated. Once the reaction is complete, we run the gel, and the first, that DNA strand which has the one nucleotide is the lightest one, so found on the base. The second one, the third one, fourth one, and in this way, it is simply like that, walking on the stairs. On a gel, after electrophoresis, we start reading the sequence from the bottom and we move towards the top. और ये मुश्किल हमारी ख़त्म हो जाती है अगर हम एक ऑटोमेटिक एनालाइजर की तरफ जाएं. That gives us a peak, and peak is detected automatically, and we get the nucleotide sequence with the automatic analyzer.